When we Got it. Did you have it? Okay. All right. Let's start our class. Okay. Let's start with the Mukar mantra. Namo Arihantanam, Namo Siddhanam, Namo Airiyanam, Namo Vajayanam, Namo Loe Savasam, Eso Panchanamokaro, Sava Pavapanasano, Manglanam Chasave, Padamamahave Mangalam. Okay. Chatari Mangal. No. We want to say Chatari Mangal part? Let's say Chatari Mangal part. It's okay. Chatari Mangalam, Arahanta Mangalam, Siddha Mangalam, Sa Mangalam, Pannatto Dhammo Mangalam, Chatari Loguttama, Arihantala Guttama, Siddha Loguttama, Sahuloguttama, Kevali Pannatto Dhammo Loguttamo, Chattari Sharanam Pavajami, Arahant Sharanam Pavajami, Siddhe Sharanam Pavajami, Sahu Sharanam Pavajami, Kevali Pannatto Dhammo Pavajami. Okay. So what did we learn? What did we do in the last class? Anybody remember what did we do in the last class? No, not we did the Kalyanak, but not Tap Kalyanak. Did we do Tap Kalyanak already? No, we did not do. Which one we did? Which one we saw? We saw 2 videos or 1 video? We did. Oh, we did Tap Kalyanak last time. Yes, you are right. You are right. We did Tap Kalyanak. I got confused. We did do Tap Kalyanak. If you guys remember, we watched the video where the King Rishabdev took up the monkhood. He went in the jungle and then he removed all his clothes and became a monk. That was part of the Tap Kalyanak. And before that, we watched 2 videos. Which 2 videos? It was the first one was Garbha Kalyanak and then the Janma Kalyanak. Okay. So far we have seen 3 videos. That means we have seen 3 Kalyanaks of Teerthankar. Garbha Kalyanak, Janma Kalyanak and Tap Kalyanak. Now Tap Kalyanak is also known as Diksha Kalyanak because you can do tap after taking diksha. You do tap after taking diksha only. Diksha means taking up the vows for becoming monk. So becoming the monk means taking a diksha. So that's why it is a diksha kalyana. Yeah. Everybody remembers 3 kalyana: Garbha Kalyanak, Janma Kalyanak, and Tap Kalyanak, or you can also call it Diksha Kalyanak. Who remembers? Who remembers all 3? I remember. Okay, Himadri, go ahead, please. I forgot. You forgot. Okay, it's okay. Abhiraj? Janma Kalyanak, Tap Kalyanak, Gyan Kalyanak. Gyan Kalyanak abhi nahi hua. We did not do Gyan Kalyanak. We did Garbha Kalyanak, Janma Kalyanak, and Tap Kalyanak. Who else will tell me which 3 Kalyanak we did? If you remember. I remember 2. 2? Okay, tell me 2. Kalyanak and Gyan Kalyanak. And no, you forgot the middle one. Yeah. So what is the middle one? Garbha Kalyana. What happens after Garbha Kalyana? The Teerthankar is born. What is that called? Janma Kalyana. Janma means birth.
Janma means birth. You cannot say birth. Don't say birth kalyanak. Say Janma kalyanak. No. Say Janma kalyanak. Okay. Garbha kalyanak, Janma kalyanak, and Tap kalyanak. And why Teerthankar have the kalyanaks? Does anyone remember why Teerthankar has kalyanak and not anybody else? Because they have done such punya. Do you know what punya is? Do you guys know what punya is? Have you heard the word punya before? Punya. Not banya. Punya. Punya. Have you heard the word punya before? Don't make noise, okay? Okay. Punya means collecting good karma. Collecting, but it's a bunch of good karmas. That's what it is. Yeah. So when you have good karma, when they come to their fruition, you will have good things happening for you. But if you have bad karmas in your bank, then your situations will be bad. Okay, you will not have enough to eat. We won't have enough to eat, or we won't have like this luxurious life, right? There are so many poor people. Why do you think there are so many poor people out there? Because they did not have enough good karmas for them to have good situations around them. Our biggest achievement is that we get to learn Jainism. Okay, that's the biggest. It can happen only when you have so many good karmas. Okay, and it is so it happens it's very rare. What is that? My computer said no low network bandwidth. That's okay. It's branched. That means it's bandwidth. Sorry. The bandwidth, yep. It's okay. I mean, as long as you can hear me, it should be yeah, okay. Your voice is just a little like crack. Oh, it goes crack. Can you open the door, please? Yeah, leave it little bit open. That's okay. Just yeah, like that. Thank you. Okay. Can you hear me better now? Yes. Okay. All right. Now we are gonna see our fourth and fifth Kalyanak video. It is combined into one because maybe there wasn't much to show separately. So they have made the combined video, but it is covering both Gyan Kalyanak and what? It's a combo Kalyanak. Combo Kalyanak. Yeah, No, Kalyanak is not combined. The video that describes it. Yeah. Combined Kalyanak video. Yeah. So the after Garbha, Janma and Tap, there is Gyan Kalyanak and Moksha Kalyanak. Okay. So can you guys guess what the Gyan Kalyanak would be about? Wait, what was the third one about? Third one was about taking Diksha. Like taking the monkhood, like becoming a monk. Yeah. Then this is probably becoming a god. Okay, why you guys are why I don't see anyone on the video? Stuti, I see that you joined 3 times. Open the connection. Open it. Yeah. It's okay. You can leave it open. It's okay. You can leave it open, Ahan. Okay. I don't see video from Namya, Stuti, and let me see who else is there. Ira is there. Aro is not on video. If you guys can turn on the video, if you don't have any technical difficulties, please turn on your videos, okay? All right. How to turn off my video? Turn off your video? Your video is on. Not that, this video. Your own video. I'm asking them to come on the video.
They're not on video on that. You are there. My video is not. Yeah, why aren't you on the video? I did. Yeah. I mean, you're right here, so I can see you. That's fine. Okay. So I was asking that, can you guys guess what would be in the next Gyan Kalyanak? What happens in the Gyan Kalyanak? The monk, Hmm. the Teerthankar, becomes God. That's true, but in particularly in Gyan Kalyanak, what happens? They get a Gyan. Yes. Do you know which kind of Gyan? I forgot its name. I've heard it, but I forgot. Did we talk about that? Did we talk about that as part of like who can be a god? We heard it. We heard it in like the first or second video we watched. Anybody else? No. Okay. Tell me, we talked about two qualities that a god should have. What are those two qualities? You guys remember? Yeah. Hmm? Bold? Serious Gati. No, not Gati. We are not talking about Gati. Okay. Vitragi and Sarvagya. I was gonna say that. Okay, you can also say it, Abhiraj. Say it one more time. What are the two qualities? Say it again. Vitragi and Sarvagya. Vitragi and Sarvagya. So what is that Sarvagyata mean? What happens? I have to put my nose to Yeah. So that Sarvagya is related to Gyan Kalyanak. Okay. The Teerthankar attains the Sarvagyata during the Gyan Kalyanak. And the name is, can I say it? Are you guys ready? Keval Gyan. What is it? Keval Gyan. Now you remember, Abhiraj? Is that the one that you were thinking? Yes. Okay. Let's watch the video, okay? Let me share the sound first. Share sound. And बच्चों, अभी तक हमने जाना तीर्थंकर भगवान के 3 कल्याणकों के बारे में। पहला, जब भगवान की सोल, उनका जीव स्वर्ग से माता के गर्भ में आता है तो देव मनाते हैं गर्भ कल्याणक। और दूसरा, जब भगवान का बर्थ हो जाता है तब देवलोग मनाते हैं उनका जन्म कल्याणक। और बड़े होकर भगवान जब प्रिंस बन जाते हैं और उसके बाद जब वो मुनि बन जाते हैं तब देवलोग मनाते हैं उनका तप कल्याणक। तो चलो अब हम जानेंगे कि मुनि बनकर उन्होंने क्या किया और उनकी लाइफ में नेक्स्ट 2 कल्याणक कौन कौन से हुए। ये नेक्स्ट कल्याणक था ज्ञान कल्याणक, जब उन्हें मिल गई इनफाइनाइट नॉलेज, मतलब केवल ज्ञान। इट इज अ सुपर नॉलेज जिससे उनको यूनिवर्स की पूरी नॉलेज अपने आप हो जाती है। तो मुनि बनकर भगवान आदिनाथ ने बहुत तपस्या की। बहुत डीप जंगल में जाकर वो ध्यान करते थे। बताओ किस लिए ध्यान करते थे? वो ध्यान करते थे अपनी आत्मा, अपनी सोल की प्योरिटी के लिए। वो बहुत दिनों के बाद आहार के लिए नगर में आते थे और आहार मतलब फूड जो खाते थे ना, वो भी रूखा सूखा और थोड़ा सा ही लेते थे। लेकिन ऐसा क्यों करते थे? वो पेट भरकर क्यों नहीं खाना खाते थे? वो ऐसा करते थे तप करने के लिए। तप करने से अपने कर्मों का नाश होता है,
अपने कर्मों की निर्जरा होती है। उन्होंने अपनी सभी तरह की डिजायर्स को जीत लिया था। वो तो आत्मा के ब्लिस में रहते थे। कभी तो वो हॉट समर्स में हिल्स के ऊपर बैठकर ध्यान करते थे और कभी चिली विंटर नाइट्स में रिवर के किनारे पे योगासन लगाकर ध्यान करते थे। वहाँ ध्यान करते करते उनकी सोल की प्योरिटी धीरे धीरे बढ़ती ही चली गई और धीरे धीरे उनके कर्मों का नाश होने लगा, मतलब उनके कर्म डेमोलिश होने लगे। और जब उन्होंने एक स्पेशल एंड प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ध्यान किया जिसका नाम था शुक्ल ध्यान। क्या नाम था? शुक्ल ध्यान। जब उन्होंने इस प्योरेस्ट ध्यान से अपने कर्मों को खत्म कर दिया तब उनको क्या मिल गया? तब उन्हें मिला केवल ज्ञान, द ग्रैंड इनफाइनाइट नॉलेज टू नो ईच एंड एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स। और जब तीर्थंकर भगवान को केवल ज्ञान हो जाता है तो वो बन जाते हैं अरिहंत परमेष्ठी। तो वो अरिहंत बन गए जिन्हें अपन नमो अरिहंताणम बोलकर रोज याद करते हैं ना। हाँ, तो जैसे ही इंद्र को पता चला कि भगवान को So, what happens when they attain Keval Gyan? When the Keval Gyan happens, Yeah. that is considered as Gyan Kalyanak. So from Teerthankar becoming Arihant, then Arihant becomes Siddh, then Acharya, then Upadhyaya, then Sadhu. No, Acharya Upadhyaya Sadhu are teachers. So God, it's like Sadhu is the first step. Okay, they don't have to become Upadhyaya or Acharya for sure, but monk they all have to become. So they became monk Ahan first, Yeah. right? So they don't become monk later on. Well, they move on to the other steps, don't they? Yeah, so the steps are like sadhu and then arihanta and then siddha. It is not arihanta, siddha and then sadhu. That is the not progress. That is the demotion. But that's how the order goes. The order goes like that because we want to bow down to the person first who is at the highest level. But even though siddhas are considered at the highest state, we worship Arihanta in the order in the Namokar mantra. We worship Arihanta first because they are the ones who taught us all about Jainism or all about how to become God. It is all taught to us by Arihanta because Arihantas are the one who has this supreme knowledge. So once they become Sarvagya, they gain this supreme knowledge and they pass it on to us. That's why we worship them or we bow down to them first. That's why Namo Arihantanam is the first line of Namokar mantra. But that doesn't mean that Arihant state is supreme. The supreme state is still Siddha. Arihantas are also supreme, but Siddha state is even above the Arihant state. But we say Namo Arihantanam first because they are the ones that taught us. So we bow down to them first and then the Siddha. And Acharya Upadhyaya Sadhu are just teachers. That's why they come third, fourth, and fifth. So the order is like Arihanta first, Siddha second, and then Acharya Upadhyaya Sadhu are third, fourth, and fifth. Yeah, but do they go to the stages? They go to the stages in the order of fifth, and then first, and then second. And then third, then No, there is no more. What? Once you become Siddha, there is no more states. That is the purest state of the soul. I don't sit. Acharya Upadhyaya. Why can we not go to the other three? Because once you become Siddha, you don't reborn here. If you become Acharya Upadhyaya Sadhu after that, then you have to take birth again. But that was the whole point to become monk, so we don't have to. Oh.
be born again? I didn't know that. Yeah, so good. That's a good question. Okay. Everybody is clear on this? Okay. So what I was trying to tell you is that when the Sarvagyata happens, or when the God has this supreme knowledge, two things happens. Okay. One, all their bad karmas are destroyed, because after they become monk, they do lot of penance, means lot of meditation, lot of tap, to destroy all the karmas. So with their tap, their penance, they destroy all their bad karmas for sure. They have some of the good karmas left. They also will be destroyed when they become siddh. But by the time they become arihanta, all their bad karma, so their bank is empty pretty much. And then when do you become siddh? You become siddh when all your karmas are gone, no matter good or bad, it doesn't matter. All your karmas have to go away. And once all the karmas are destroyed, that's when the pure state of soul is achieved. And that is the siddh, state of becoming siddh. So here they are saying that once the Rishabdev became a monk, after that they achieved Keval Gyan, the supreme knowledge, which is they got to know they had a knowledge where they knew past, present, and future at the same time, in the same moment. Okay, so what happens after they achieved the Keval Gyan? The Indra. Indra is, who is Indra? He is the king of the angels in the heaven. That is the Indra. Do you remember he came down to celebrate God's birth on the earth with his wife Shachi Indrani, and then they took the kid Rishabh Dev to the Meru Parvat and did the Abhishek and all that. So now the angels will come again for celebrating the Gyan Kalyanak. Yes. Let's watch it. केवल ज्ञान हुआ है तो वो अपनी पूरी फैमिली के साथ भगवान की पूजा करने के लिए पुरीम ताल नामक सिटी में आया। पता है, इंद्र के आने से पहले ही धनपति कुबेर ने, मतलब जो कुबेर नाम के सुपर रिच देव होते हैं ना, उन्होंने एक बहुत ही सुंदर और ह्यूज सेटअप बनाया। बताओ उस कांग्रेगेशन या उस सभा को क्या कहते हैं जो कुबेर ने बनाई थी? उसे कहते हैं समोशरण। वो समोशरण बनता है एक I know what is sunshine. Okay, everyone sees this Samosharan? This is how Bhagwan Samosharan is. And this is the state how he sits in the Samosharan on top of like a, Like a throne. yeah, like throne kind of looking flower shape throne. But if you see, like he's like kind of floating in the air. He doesn't really sit. Yeah, Aro, you have question? Sorry. Aro? Your hand is raised. Do you have question? Maybe not. Ira, you have question? Is it in the sky? Who, the god The Samosharan. or the Samosharan? The Samosharan. Samosharan is on the land. It's not in the sky. Oh, where is it on the They make it on the earth. Whenever, right now it's not there, beta. Oh, I thought it's like the same Samosharan every single time. Every single time when the real God is here. Oh, did they re-break it? Yeah. Why? Because it doesn't need to be there anymore. They every time, so we have 24 Teerthankars, right? So for all 24 Teerthankar, this Samosharan happened. Okay, for all 24 of them. Whenever they attain Keval Gyan and become Arihanta, the
angels from the heaven, and the special angel, his name is Kuber. Okay, the Kuber angel, he comes and then he creates all this because he's kind of a what do you call it? The most wealthy of all the angels. So he does create all this with his magic and all his um power. Okay, and then you can see there are different there are many different section in this. There are like some for boys, some for only girls, some for angels And and for male the and female animals, angels, and there are some for monks, some for arika, and then some for animals. You see them? There are 12. Okay, there are 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. It is called Bara Sabha. Means Bara means 12. Sabha means assembly. 12 section assembly. Yeah. why is there only 24 of the Tirthankars? Why there are only 24 Teerthankars? So there it is just the way it is. Every time there are only 24. No more, no less. It has to be exactly 24. Why? Maybe because only that many people can gain certain type of karmas to become Tirthankar and come on this earth so that they can uplift even other souls just like them. Mom, I can watch like this. Yeah, okay. So anybody has any other question? Okay, so this is how the Samosharan is created after the god attains the Keval Gyan. Okay, and the Indra creates it. This is how it is. There is Manastamba. Do you see this golden thing over here? It is one is here, one is here, one is on this side. See over here, and then probably one is behind. So in all four directions, there is Manastamba. Okay, it is so tall, and then in each Manastamba, there are idols, god idols sitting there. And then you can also see over here in the circular thing, there are like lot of temples, and then there is water body in between, and then there are so many trees. So Samosharan is a very beautiful thing that the Kuber creates, and it has a lot more thing. But as you go inside, you will have God sitting in the middle, and they will have Divya Dhvani 6 times a day, meaning Divya Dhvani is what? Their preachings, means they will give upadesh, they'll give discourses to. Yes, anyone has question? I hear a noise. Yes, Himadri. Is the Samosharan in the sky? No, it will be made at on the earth, but it is like this. Okay, so it is made like that, and in the middle the god will be like kind of floating on the sky, in the sky. If you see over here, he is kind of floating. So for it's like between the throne and the god, there will be like this much space, 4 angle space. He will not be sitting on the throne, he will be kind of floating, but the Samosharan itself is made on the earth. I know that you guys are getting confused with the blue color around. It seems like the whole Samosharan is floating, but that's not the case. It is made on the earth, on the ground. Okay, any other question? Okay, let's just quickly finish the video then. एक बहुत ह्यूज नीलमणि मतलब प्रेशियस ब्लू जेमस्टोन्स वाले ह्यूज रॉक पर it's a big and very beautiful setup that has about 20,000 steps. वहाँ पर एंट्रेंस पर सुंदर सुंदर लोटस फ्लावर्स वाली परिखा मतलब वाटर बॉडीज बनी होती हैं. कहीं कहीं नाट्यशालाएं भी बनी होती हैं, मतलब थिएटर्स बने होते हैं.
जहाँ पर देव देवियाँ भगवान की भक्ति में नृत्य कर रहे होते हैं। They dance in happiness and gratitude to celebrate the केवल ज्ञान of तीर्थंकर भगवान। उस समो शरण के सबसे ऊपर होती है वो स्पेशल प्लेस जहाँ पर भगवान विराजमान होते हैं। उसे कहते हैं गंधकुटी। गंधकुटी में होता है भगवान का प्रेशियस स्टोन से बना सिंहासन, और सिंहासन की चारों साइड्स पर एक श्री मंडप बना होता है, मतलब अ प्लेस फॉर डिफरेंट पीपल टू सिट एंड डू दर्शन ऑफ भगवान जी। अच्छा बताओ, भगवान के श्री मंडप में कितने डिफरेंट एरियाज होते हैं सबके बैठने के लिए? There are 12 different areas for everyone to sit, जिन्हें कहते हैं 12 सभाएं। इनमें देव देवियाँ, ह्यूमंस, एनिमल्स, इवन बर्ड्स भी आकर आराम से बैठ सकते हैं। और एक मजे की बात है, पता है कि सब भगवान के आसपास बैठते तो एक सर्कल में है, लेकिन भगवान जी का फेस चारों तरफ से एक जैसा दिखता है सबको। उनको लगता है कि जैसे भगवान बिल्कुल हमारे सामने बैठे हैं। अच्छा, ये बात बताओ कि भगवान क्या अपने सिंहासन के एकदम ऊपर बैठते हैं जैसे हम अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं? नहीं, भगवान जी सिंहासन से 4 अंगुली ऊपर स्पेस में विराजमान रहते हैं। वो किसी भी चीज को टच नहीं करते, कोई भी चीज उन्हें टच नहीं कर पाती। भगवान के बिल्कुल पीछे रहता है एक बहुत सुंदर ट्री, जिसे कहते हैं अशोक वृक्ष, जिसे जस्ट देख लेने से ही इतना अच्छा फील होने लगता है कि सारा शोक मतलब सारी सैडनेस दूर हो जाती है। भगवान के दोनों साइड्स यक्ष कुमार फैमिली के देव उन्हें 64 चंवर ढुराते हैं। भगवान के हेड के ठीक पीछे होता है एक बहुत ग्लोइंग ब्राइट सा एरिया, जिसे कहते हैं भामंडल। इट्स लाइक एन ऑरा अराउंड भगवान हेड। वहाँ देव लोग बहुत ही अच्छी अच्छी ट्यून्स में, मेलोडीज में और दुंदुबी बजा बजा कर भगवान के केवल ज्ञान को सेलिब्रेट करते हैं। बहुत मंद मंद मतलब बहुत सूदिंग ब्रीज चलती रहती है, और देव लोग स्काई से बहुत सुंदर और स्पेशल कल्प वृक्षों के खुशबू वाले फ्लावर्स शावर करते हैं। कौन कौन से स्पेशल फ्लावर्स? उनके नाम होते हैं मंदार, नमेरू, सुपारीजात, संतानक। हर समय स्काई में से गंधोदर की ड्रॉपलेट्स के भी सूदिंग शावर्स होते रहते हैं। कितना ब्यूटीफुल सीन होता है ना ये। पूरी अर्थ कांच के जैसे मतलब ग्लास के जैसे क्लीन एंड क्लियर हो जाती है। कहीं भी धरती पर कोई कांटे, कोई थॉर्न्स नहीं रहते। और आपको पता है एक मजेदार बात कि ट्रीज पर सभी 6 सीजन्स के फ्रूट आ जाते हैं एक साथ। भगवान के आसपास 12 किलोमीटर्स तक कोई भी भूखा नहीं रहता, कोई दुखी नहीं रहता, सब अच्छा अच्छा होता है। जीव सब आपस में फ्रेंडली हो जाते हैं। वहाँ जाके डेफ एंड डम सब ठीक हो जाते हैं। अच्छा बताओ, ये दिव्य ध्वनि या भगवान का उपदेश किस लैंग्वेज में होता है ना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अरे ये स्पेशल उपदेश किसी स्पेसिफिक लैंग्वेज में नहीं होता, लेकिन अपने आप सबको अपनी अपनी लैंग्वेज में समझ आ जाता है। बर्ड्स उसे अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं, एनिमल्स अपनी लैंग्वेज में, ह्यूमंस अपनी में और देवलोग अपनी लैंग्वेज में। Isn't it amazing? पता है जैसे हमारे मुनि महाराज विहार करते हैं ना, वैसे ही तीर्थंकर भगवान सबका कल्याण करने के लिए, सबको अच्छी अच्छी धर्म की बातें बताने के लिए विहार करते रहते हैं। विहार के समय एक स्पेशल स्पिनिंग व्हील जिसे कहते हैं धर्म चक्र और 8 टाइप के मंगल द्रव्य मतलब अच्छी 8 थिंग्स दैट इंडिकेट हैप्पीनेस, ये सब उनके आगे आगे चलता है। स्वर्ग के देव
भगवान के चरणों के नीचे स्वर्ण कमलों की मतलब गोल्ड के लोटस फ्लावर्स की रचना करते जाते हैं, उनकी रिस्पेक्ट में, उनकी वेलकम में। लेकिन क्या भगवान उन फ्लावर्स के ऊपर पैर रखकर चलते हैं? नहीं, भगवान तो उन फ्लावर्स से भी 4 उंगल ऊपर पैर रखते हैं। भगवान तो आकाश मार्ग से मतलब स्काई से विहार करते हैं। एक बात बताओ कि जो कुबेर ने स्पेशल ग्रैंड अरेंजमेंट समोशरण का किया होता है, उसका क्या हो जाता है जब भगवान विहार कर जाते हैं? वो तो पीछे रह जाता है ना? और भगवान तो विहार कर गए। हाँ, तो विहार करते करते भगवान What's the thing the gods, the Teerthankar sits on it? What Yeah. happened? Did we run out of time? I stopped because Ahan has a question. Is this a motion built We on even ran out of time. like a jet? Is on sci-fi? Yeah, it is on some kind of gem that is it's yeah, it's a stone. It's that big stone. Yeah, sapphire. When will this class end? It always ends at 8:10. Okay, one more minute. Yeah, it's already 8:08, and I think we'll have to go over. You wanna complete the video, or you guys wanna do it in the next class? Continue. Continue. the video. Okay, let's complete the video. जहाँ रुक जाते हैं सुपर रिच कुबेर देव, वहीं पे न्यू समोशरण क्रिएट कर देते हैं। Isn't it amazing? ये सब देव लोग भगवान का ज्ञान कल्याणक सेलिब्रेट करने के लिए करते हैं। तो अब ऋषभ देव विहार करते हुए और सभी जीवों को उपदेश देते हुए कहाँ पहुंचे? कैलाश नाम के माउंटेन पे एक ऊंचे पहाड़ पर पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने योग निरोध करना शुरू किया। मतलब he sat there silently without any movement। अब वो समोशरण में नहीं बैठते थे और ना ही कोई उपदेश देते थे, जस्ट एक माउंटेन की तरह स्टेबल हो गए थे। कितने दिनों तक उन्होंने योग निरोध किया? 13 डेज तक। और 13 डेज के बाद आया वो स्पेशल डे जिस दिन क्या हुआ? उस दिन चतुर्दशी थी। उस दिन भगवान ने वो स्पेशल प्योरेस्ट शुक्ल ध्यान किया और अपनी आत्मा को एकदम प्योर बना लिया। उनकी आत्मा अपनी बॉडी को छोड़कर कहाँ चली गई? सीधे सिद्ध शिला पर चली गई। भगवान की बॉडी बिल्कुल डिसअपीयर हो गई। अर्थ पर सिर्फ हेयर और नेल्स ही रह गए। तो भगवान को क्या हो गया था? भगवान की आत्मा को, उनकी सोल को निर्वाण यानी कि मोक्ष मिल गया था। उस टाइम स्वर्ग से जय हो करते हुए सभी देव आए। उन्होंने माया से स्पेशल पावर से भगवान की डुप्लीकेट बॉडी बनाई और एक स्पेशल फायर प्लेस में अग्नि कुंड में रिस्पेक्ट से उस बॉडी को विराजमान किया। और आपको पता है एक स्पेशल देव होते हैं अग्नि कुमार। अग्नि मीन्स फायर। तो वो अग्नि कुमार देव के मुकुट में मतलब उनके क्राउन में से फायर निकलता है। अग्नि कुमार देव ने अपने मुकुट से उस फायर प्लेस को टच किया और लाइट अप कर दिया। उसमें आग जला दी, अग्नि जला दी। तो भगवान की बॉडी का संस्कार किया। जब अग्नि धीरे धीरे शांत हो गई तो वहाँ क्या बचा? एशेस। तो सभी देवों ने वहाँ की ऐश को अपने माथे पर, अपने फोरहेड पर, अपने नेक पर, अपनी चेस्ट पर बड़े ही रिस्पेक्ट से लगाया, जैसे हम मंदिर में गंधोदक लगाते हैं ना। सभी देव भगवान के निर्वाण के सेलिब्रेशंस कर रहे थे, क्योंकि अब भगवान की सोल कभी भी वापस इस वर्ल्ड में नहीं आएगी, किसी भी गति में नहीं जाएगी। भगवान की सोल तो एकदम फ्री होकर सिद्ध शिला पर चली गई है। वहाँ हमेशा ब्लिस बना रहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये था निर्वाण कल्याणक।
तो आज हमने जाना ग्रैंड सेलिब्रेशन। अब हम जान चुके हैं पांचों कल्याणकों के बारे में। आप इन पांचों कल्याणक को इमेजिन करो और प्रेयर करो कि हमें भी इन सेलिब्रेशंस में जाने का मौका मिले। हाँ, और पता है मंदिरों में पंच कल्याणक महोत्सव होते हैं और हमें वहाँ जाकर भी पार्टिसिपेट करना चाहिए। करेंगे ना हम ऐसा ही? जय जिनेंद्र। Well, that's a no, but I'm leaving. No. Why? Okay. So we finished both the Kalyanaks, Gyan Kalyanak and Tap Kalyanak. Okay. We are over time. So I'll see you guys in the next class. Why I don't see you guys? Where are you guys? Let me see. Here. Okay. All right. Any questions? No. No? Everybody understood what they said? All right. Then we'll continue with our chapter Bhagwan and Teerthankar from next class. Okay? Jai Jinesh. Jai Jinesh. Bye. Jai Junan. Bye.